नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज स्टडी मटेरियल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी सीरीज का पार्ट 3, where we will study about the directive principles of state policy, which is included in the part 4 of our Indian Constitution. ये वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टली गवर्नमेंट्स और वेलफेयर ऑफ द स्टेट से लिंक्ड है, and you can expect MCQs and statement based questions in exams of BPSC, NEET, UPSC and many more. तो हाँ, पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए टू ग्रैब द नॉलेज रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सेक्शन 1 इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब है आप इस आर्टिकल्स को और या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट में जाके इसका एनफोर्समेंट नहीं कर सकते, बट इट प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल गवर्नेंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन मोटिव है वो है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जिसका मोटिव होगा कि सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, पॉलिटिकल एंड सोशल, इकोनॉमिकल एज वेल एज डेमोक्रेसी बने रहे। और इस सेक्शन से जो मैं एग्जाम टिप दे सकती हूँ वो होगा दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड from which article to which article. And section 2 is about the classification of DPSP, जिसको हम 3 categories में divide कर सकते हैं: Socialist principle, liberal intellectual principles as well as Gandhian principles. Socialist principle is from article 38 to article 41. Article 38 talks about social, economic and political justice. Article 39 adequate means of livelihood and equal pay for equal work. Article 41 is right to life, education and public assistance. Gandhian principles, it is article 40, that is village panchayats. Article 43 is the cottage industries, and article 46 is the protection of SC, STs and other minority weaker sections. The liberal intellectual principles is article 44, uniform civil code. Article 47, nutrition and public health, and article 50 is the separation of the judiciary from executive. Section 3 is about the important features and facts of DPSP. The first fact is DPSP is inspired by Irish Constitution. Fundamental rights as well as DPSPs together make up the soul of the Indian Constitution. The difference between the fundamental rights and DPSP is fundamental rights एक individual के लिए होते हैं और DPSP as a whole society for the welfare of the society के लिए होते हैं. From this section you can expect questions such as the DPSP has been inspired by which constitution as well as what are its basic features. Now in section 4 we'll learn about the amendments related to the DPSP. All the important amendments are 42nd amendment 1976, in which article 39A added free legal aid. Article 48A ने add किया environmental protection, और 44th amendment 1978 में right to property को fundamental right से shift करके article 300A में डाला गया। तो इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप मैं आपको दे सकती हूँ वो है कि environmental protection was added under which amendment, and in the same context free legal aid was added on which context, or what are the amendments in which year. You can expect such questions. तो दोस्तों, ये था crisp और complete discussion on the direct principles of state policy. हर एग्जाम में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड MCQs, रीजन, assertions, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते ही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो 42nd अमेंडमेंट दैट इज ऑन 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, फोकस रहो, गवर्नमेंट डिश के साथ ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट